So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉरपोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आई होप आप वो लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे और अब फिर इस पार्ट 10 में आए होंगे। तो पार्ट 10 यानी कि आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो शुरुआत होने जा रही है, हम पढ़ने वाले हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स या नेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, किस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन होता है, किस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है, वैल्यूएशन फॉर जीएसटी, जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। तो बहुत सारी चीज़ें जीएसटी की होने वाली है। सो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं indirect tax ka. But before that, if you're new to the channel, I hope you have subscribed the channel and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. So let's start. Let's understand what indirect taxes are. Okay. So indirect taxes are taxes which are levied on goods and services rather than on income or profit. तो जैसे आप देखते हो कि भाई जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, वो किसी इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की, किसी एंटिटी की डायरेक्टली इनकम पर लिवाई किए जाते हैं। But in case of indirect taxes, as the name suggests itself, they are not directly levied on the income of the individual or the profits that a particular individual or a business incurred. Basically, these are the taxes which are levied on goods and services rather than on income or profit. That's what the important thing about indirect tax is. So let's suppose you visited a restaurant, और रेस्टोरेंट में आप जाके कोई डिश ऑर्डर करते हो, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हो, एंड देन एट द एंड ऑफ, जब आप खाना ख़त्म कर देते हो, एट द एंड ऑफ द डिनर, जब बिल आता है तो वहाँ पर आप देखते होगे उस बिल में बहुत सारी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। उसमें कुछ सर्विस टैक्स हो सकता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं। कई बार आप देखते हो बिल को, सारे टैक्सेस भी अच्छी तरीके से देखते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल आता है सीधे पे कर देते हो। सो ये जो टैक्सेस होते हैं डायरेक्टली आपकी इनकम पर नहीं लग रहे हैं, ये आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। एंड बेसिकली होता क्या है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरर्स पहले उन्हें कलेक्ट करते हैं और फिर वो मैन्युफैक्चरर्स उनको पास ऑन करते हैं टू द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बर्डन भी शिफ्ट हो रहा है टैक्स का। अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स के हैंड में है, देन इट पासिस ऑन टू द कंज्यूमर और द रिटेलर, एंड फ्रॉम द कंज्यूमर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, माफ कीजिएगा, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, इट अगेन पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट, you know. So that's how this indirect tax का हम कह सकते हैं, जो जो ये साइकिल है, it goes on. So they're collected by intermediaries such as retailers or manufacturers from consumers and then passed on to the government. Here the burden shifts on the final consumer as the taxes are included in the price of goods and services. So we can say the burden shifts on the final consumer only, as the taxes are included in the price of goods and services. So let me give you an example. Let's suppose when you buy something, what happens? The price includes the tax also. It's not like that the price is different, the tax is different, and you have to pay them separately. No, within that price, the tax is also included. But the shop pays that tax to the government. So you don't pay the tax directly to the government, it's added to the price of goods and services. And that's why it is an indirect tax. Okay? So instead of कि वो इनकम और प्रॉफिट पे लग रहे हैं, दे आर लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स व्हाई इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप this is clear to you now. So the burden of income tax, when I say this ki burden shift hota hai on the final consumer, what I trying to mean here is that the burden of indirect taxes, it falls on that final consumer, as these taxes are included, I would say, in the price of goods and services. That's why the burden shifts on the final consumer. So I hope this is clear to you. Okay, so yeah. Okay, let's talk about the nature of indirect tax. I hope example आपको clear है. Let's talk about the nature. Okay, so
One of the first feature, or I would say nature, of indirect tax is that here you can see this shift of tax burden. Just now I have explained you, like, whenever you go and buy something, let's suppose you're buying a smartphone, what happens, that smartphone that you're going to buy, that includes tax also, but the shop pays the tax to the government. You are not paying directly to the government, you're paying it for the goods and services. So ultimately, the shopkeeper is paying that to the government, but the burden falls on you that you are paying that particular tax since you are buying that goods and services. We'll talk about those tax. Like one such tax is GST, goods and services tax. पहले बहुत सारे होते थे, कस्टम ड्यूटी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, वैट लग रहा है, बट अब एक ही कर दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज में जब भी आप वैल्यू ऐड कर रहे होगे टू द प्रोडक्ट, एक टैक्स आपको लगाना है एज अ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर और द प्रोड्यूसर, that is your GST. एंड इट रियली इज हेल्पफुल क्योंकि आप टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम नहीं लगा रहे हो जो कि ओल्डर सिस्टम में था. So you don't pay the tax directly to the government. What I'm trying to mean here, it's basically it is added to the price of goods and services. So there is a shift of tax burden. Okay. So I hope this is clear to you कि किस तरीके से shift देखने को मिलता है. Okay. Ultimately it shifts to the consumer. Another important thing about or another important feature about indirect tax is that it is regressive in nature. This means that people with lower income may end up paying a larger proportion of their income in indirect taxes compared to higher income individual. So whatever your income level is, like for example, a higher income person is going to a same restaurant, then a lower income individual is also going to a same restaurant. Both of these individual, higher income individual, lower income individual, they're paying the same taxes for that for the dish they have ordered. Let's suppose they visited at hotel for the room that they have booked, let's suppose they have paid the same amount of tax. So what I trying to mean here is that it's quite regressive in nature, you know, that even people with lower income may end up paying a larger proportion of their income in indirect taxes compared to higher income individuals. So that's what shows its regressive nature, since I would say they divide uniformly on goods and services, so they tend to be regressive. Okay, so I hope this is clear to you. Other than that, the third feature is that unlike direct taxes like income tax, indirect taxes do not depend upon the income of the individual. So there is no relationship with income. I would say there is no direct relationship with income. It is related with income, but there is no direct relationship with income. So like direct taxes like income tax, so there we have this direct relation with income because ultimately the tax was divided on the income only, and that's why the name is income tax. But here in this case in indirect taxes, it do not depend on the income or wealth of the individual. सो दे आर बेसिकली अप्लाइड बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न. जितना ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे, जितना ज्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे उतना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे. अब यहीं से बात आती है चौथे पॉइंट की, यानी कि चौथे फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की, दैट इज इनकरेज सेविंग. अब आप खुद सोचो, अगर आप कहीं ना कहीं कम कंजम्पशन करोगे, कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि ठीक है अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज में जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें मैं वेस्टेज नहीं करूंगा, तो इनडायरेक्टली आप सेविंग्स को ही तो कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहे हो, क्योंकि आप टैक्स पे कम करोगे. टैक्स भी तो कम पे करोगे जब आप कम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करोगे. लेट्स सपोज आप हफ्ते में 3 बार रेस्टोरेंट जाते थे, आपने सोचा कि भाई नहीं, नेक्स्ट वीक से मैं एक ही बार जाऊंगा रेस्टोरेंट में. सो अल्टीमेटली what you're trying to do is you are encouraging that level of saving also. Okay, so indirect taxes, they may encourage savings because they are only charged when goods and services are consumed. So higher prices due to taxes can lead consumers to limit that unnecessary spending also, and therefore it encourages that savings also. So I hope this is clear to you. So I hope this lecture about indirect tax, its definition, its features, it is clear to you. अगर कोई और भी features हो सकते हैं तो I'm always open to your feedback, या जो भी आप बता रहे हो comment section में मुझे ज़रूर बताएं क्या और features हो सकते हैं indirect tax के. In the next lecture, we are going to talk about GST. What it is, its structure, also its slab. So that's it about this lecture. Till then, keep studying. Take care.